हेलो गाइज। आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। आज डीएम सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट इंजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होती क्या है। अ फंक्शन इज said to be injective if and only if fx is equal to fy implies that x is equal to y for all element x belongs to set x and y belongs to set y। मीन्स एग्जैक्टली होता क्या, जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन के लिए, उनके लिए कोई ना कोई डिफरेंट इमेज हमारे लिए होनी ही चाहिए कोडोमेन में। देन वी कॉल देम एज अ इंजेक्टिव फंक्शन। A function is said to be injective if and only if it is one to one function. It is most important. So अगर फंक्शन वन टू वन नहीं हुआ तो हम उसको इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते। And it is most important. Here we say that if x is equal to y implies that x is equal to y, मीन्स ये कंडीशन हमें प्रूव करने की है, तभी हम उसको इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। मीन्स हमने पहले टू प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट देखी क्या, इंजेक्टिव फंक्शन की, मीन्स डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हो उनके लिए डिफरेंट इमेजेस कोडोमेन में होने ही चाहिए। देन वी हियर सी दैट अगर फंक्शन हमारा वन टू वन नहीं हुआ तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते। एंड इट इज थर्ड प्रॉपर्टी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई implies that x is equal to y. Here we see that one to one function for better understanding. Function f assigns a to b is said to be one to one if a different elements in a A have different images in a B। मीन्स हमने पहले ही देखा कि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उनके लिए कोई ना कोई डिफरेंट इमेजेस हमारे कोडोमेन में होनी चाहिए, तभी हम उसको वन टू वन फंक्शन कह सकते हैं। अगर वन टू वन फंक्शन हुआ तो हम उसको इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। Now we see one example for better understanding. Our rectangle represents universal set. It is our set A. Consider it is our domain having elements 1, 2, 3, 4. It is another set. Consider it is codomain having elements 1, 4, 9, 16. Here we see that all the elements in our domain Here we see that all the elements in our domain have a different images in our codomain. Like here we see that 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, 4 के लिए 16 है. That's why we call them as our one-to-one function. Now we see another example for better understanding. Determine whether the function f from abcd to 1, 2, 3, 4, 5 with fa is equal to 4, fb is equal to 5, fc is equal to 1 and fd is equal to 3 is a one-to-one or not. So कर लेते हैं, देखते हैं कि वन टू वन है या नहीं। सो इट इज़ आवर डोमेन पार्ट, सो हम लिख के रखते हैं ए बी सी डी। इट इज़ आवर को डोमेन पार्ट, लिखेंगे ये भी 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारी प्रॉपर्टी फंक्शन देखते हैं। Like fa is equal to 4, fa is equal to 4, fb is equal to 5, fb is equal to 5, fc is equal to 1, fc is equal to 1, fd is equal to 3, fd is equal to 3। अब हमने पूरा बना के ले लिया। अब देखते हैं ये वन टू वन है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, ऑल द एलिमेंट्स इन अ डोमेन हैव अ डिफरेंट इमेजेस इन अ कोडोमेन। सो ए के लिए 4 है, बी के लिए 5 है, सी के लिए 1 है एंड डी के लिए 3 है। सो इट इज वन टू वन फंक्शन बिकॉज इट शोज डिफरेंट एलिमेंट्स having different images in our codomain. Here we see that different images in our codomain. Now we see important point for solving sums to show it is injective or not. So first हमें क्या करने का है, fx1 निकालने का है, then second हमें fx2 निकालने का है, and third इन दोनों की वैल्यू हमें इधर पुट करने के हैं for finding the x1 is equal to x2. When we got x1 is equal to x2, then we call them as a injective function. So now we see sum 1. Determine whether the function fx is equal to x square is from the set of integers to the set of integers is a injective. Okay, देखते हैं इंजेक्टिव है कि नहीं। So first we see fx is equal to x square according to our step 1.
हमें एफ एक्स वन कैलकुलेट करने का है, सो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर। देन हमें एक्स टू कैलकुलेट करने का, एफ एक्स टू, देन एक्स टू स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू, एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू की वैल्यू हमें इन दिस इक्वेशन पुट करने अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट कंडीशन फॉर गेटिंग एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। सो कर लेते हैं वो भी। एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, प्लस माइनस एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, एंड अगेन हम आगे सॉल्व करेंगे तो वी गेट प्लस एक्स वन is not equal to minus x2, means 3 is not equal to minus. Here we take a values like a 3 and here we take 3. So 3 क्या सेम है क्या माइनस थ्री से? नहीं, इज नॉट इक्वल टू, सो इट इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम कंक्लूजन देखते। द फंक्शन एफ एक्स is a not injective because for instance f2 is equal to f minus 2 is equal to 4, means f2 और f minus 2 का आंसर 4 आ रहा है, बट हम जब भी उसके x1 एंड x2 देखेंगे तो इट इज नॉट द सेम, इट इज डिफरेंट। ये आप देख सकते हो, 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, मीन्स हमें करना क्या है, हमें ऐसे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का आंसर सेम आने वाले एलिमेंट्स को लास्ट में देखने का है कि वो सेम है या नहीं। सो हियर वी सी दैट इट इज नॉट द सेम। Now we see second sum. Determine whether the function f(x) is equal to x plus 1 is from the set of real to the set of real numbers in the injective. So हमने लास्ट में क्या किया वैसे इधर भी करने का। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्स वन प्लस वन, एक्स टू प्लस वन, and then we put the values of fx1 and fx2 in our solution. So here we see that then plus 1 cut, we got output as x1 is equal to x2। अब हम x1 के लिए 2 देखेंगे and x2 के लिए 2, so 2 is equal to 2, and we give conclusion that the function fx is an injective because for instance f2 और f2 is equal to 3, मीन्स हमने x1 के लिए जगह पे 2 पुट किया एंड x2 के जगह पे भी 2 पुट किया, तो वी गॉट आउटपुट 3। अब ये 2 सेम है क्या? हियर वी सी दैट इट इज सेम। मीन्स आप सोच रहे हैं इधर -2 क्यों नहीं पुट किया, क्यों -2 पुट करेंगे? अगर -2 पुट किया तो हमारा आंसर एक का 3 आएगा और एक का -1 आएगा, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें दोनों का आंसर सेम चाहिए। दैट्स व्हाई पुट हियर 2। हियर फर्स्ट सम, हियर हमने देखा कि यहाँ हमने -2 पुट किया, सो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। दैट्स व्हाई हियर वी गिव -2। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर अपकमिंग सीरीज ऑफ कैलकुलस एंड डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।